Hello everyone, am I audible? Guys, yes or no, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Great. So, fine. Let's begin. Let me know once you can see my screen. Yes, sir. Fine. Great. Okay, so let's begin for today. And today, the topics which we'll be covering, I would say something which is very important. You guys should surely, other than what has been taught in class, I'll also share you guys, links from which you can do some further reading. I would also suggest go through online, tutorials and documentation जहाँ भी आपको मिलता है to go through whatever we are covering today. Okay, because this is something which is like one of the most fundamental things that everyone should be aware of in Salesforce. Am I clear? Yes, sir. Fine. Great. Right. So what we will be covering today is users, profiles, and permission sets. Okay, so the first thing which we'll cover today first is what is a profile. Now, as I have already given you guys a brief about what is a profile, right? It is nothing but a collection of permissions and access and default values for things that you configure for all the users in Salesforce. Now, what does that entail? Let's begin. And for now, what I'll do is I'll create a new profile and then I'll walk through everything that we're configuring on this. So let's do one thing. I'll go to a system administrator profile, right? So I'll create a new profile from the system administrator profile. So let's go existing profile. I clone a system administrator and I save this as custom admin. Okay, so I clone this profile. The only reason you always get this clone functionality from profile is because profile के अंदर इतना सारा settings होता है, to get a person to make all those settings from scratch is a very long manual task, which is why what it lets you do is you clone something from one of the profiles, and based on your need, you can modify the things. Now, in this case, I have copied it from custom administrator only. But normally what you want कि जिसको जो profile में access है, उसके अलावा they should not have access to any other thing, right? Which is why you will see there is another profile which is normally used for template, which is this minimum access Salesforce. What does this mean? Within this profile, you will find most of the permissions are not there. So you should ideally be cloning this from this profile. Then based on your requirement, आप उस profile पे जाके आपको जो permissions देना है, जो additions देना है, वो आप करेंगे. That way, there is a very less chance of someone getting excess permission than what you want them to have. Okay. Now in this case, because I wanted to show all the different types of permission जो होना चाहिए, which is why I chose admin, because from this profile you can have access to almost everything, right? You can modify access to everything. So let's go to the profile which we have created. Now what we will do is we will edit this profile, and one by one we will walk down what are all the things within this profile and how do you want that to be configured. Right. So I've just edited this. You can just add a description. This is a custom administrator profile created for controlling access within Salesforce. Right. Normally description में आप लोग क्या देंगे? You will add basically what is the kind of role you want this profile to be given to. कि ये प्रोफाइल किन यूजर्स के लिए बना है वो आप डिस्क्रिप्शन में ही डाल देंगे, ताकि बाद में किसी को मॉडिफाई करते वक्त कोई सिस्टम से गो थ्रू कर रहा है, दे वांट टू अंडरस्टैंड, सो दे गेट एक्सेस यूजिंग दिस. नाउ
Within this, what is the first thing that you have? The first thing that you can configure is which apps you want this profile to have access to. Now, what does that mean? Basically, right now from here, I can switch to any of the apps which are applicable here, right? The ones which are standard. Along with that, अगर मैंने कोई नया ऐप बनाया है तो उन सब का एक्सेस भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ. As an administrator, I will have access to all of this, which is why, because I have cloned from admin, you will see all the apps have access here. But in an actual use case, what you will want, let's say आपने 2-3 टाइप के apps बनाए हैं. So there is, let's say, one app for sales जो आप चाहेंगे खाली sales team ही access करे. तो उनके प्रोफाइल पे you will give them access only to the sales app. Similarly, आपने जो employee management system बनाया है, let's say. So for that, I would want that okay, only HR should have access to this one, or internal people should have access to this one. तो उनको जो प्रोफाइल दूंगा उनको मैं उसमें access दूंगा. Let's say I have created a customer profile for the people who load the data, like admin का data भी है, HR का data भी load करते हैं, कोई भी type का records bulk upload करते हैं. तो in that case I have to provide them app access to all the apps ताकि वो हर app में जाके देख सके कि okay, what is the data, what I need to pull, what I need to see, right? So the first thing in profile which you control is what other apps you want the person to have access to. Now in this case, you will see most of the apps are visible because, as I told, from admin I have copied it, so everyone has access to this one. यहाँ पे एक ये खाली हमारा ये read only है. This is the playground starter. This will be default visible only because ये वाला org मैंने trailhead से बनाया है इसीलिए, right? अगर normal जो आप लोगों के org में you won't have this app. ओके, तो ये ऑप्शन रहेगा नहीं. ये जब ट्रेलहेड से आप बनाते हो तो उसका ट्रेलहेड वाला ऐप का एक्सेस होना मैंडेटरी है, इसलिए दिस इज विजिबल एंड आई कैन नॉट हाइड इट आल्सो, राइट? ऑल एप्स आर विजिबल. नाउ विद इन दिस द अदर थिंग इज ऑन लोड which app opens, right? Let's say I give access to 2-3 apps, but I want when I log in मेरा sales app ही open होना चाहिए. In that case, I have to make one of these apps as my default. Right, whatever app you make as default, that is the app which will open whenever you log in. Like previously for that different profile, we had made employee management system as default, which is why जब log in कर रहे थे खाली employee management system में दिख रहा था और खाली वही open हो रहा था. But in this case, what I'll do, I'll make this. Now if you see here, जो भी हमारा default app है, right, that becomes immediately disabled. What does that mean? अगर कोई डिफॉल्ट ऐप है और आपने उस पर एक्सेस ही नहीं दिया, इज दिस अ वैलिड सिनेरियो? कैन दिस बी अलाउड? इट वोंट वर्क, राइट? You can't make an app default for someone which they don't have access to. So which is why only the apps which you make visible can be made default. Now what happens if I have a few of the apps and I make them default? You will see immediately they also become visible. What does that mean? Using this flag, you can control, okay, I make this default, there is no chance that that app will be hidden for any of the profile users. Other than that, within the app settings from the profile level, you only control the visibility. Okay, एक्चुअल ऐप के अंदर जो जो चीजें हैं जो हमको मॉडिफाई करनी है, कैसे टैब्स आएंगे, कैसे वो आएंगे, फॉर दैट वी हैव द ऐप मैनेजर, जहां से आप ऐप बना सकते हो, हटा सकते हो, राइट? ऐप को मॉडिफाई कर सकते हो, ऐप बिल्डर से आप मॉडिफाई करोगे. सो दोज आर डिफरेंट टूल्स. But access, as I told you, is controlled using what? Using the profile. Now, after that, there is something called connected app access. This connected app access is basically what? Salesforce के अंदर, Salesforce by itself is a cloud application which runs by itself, cloud पे hosted है, there is not an issue. Now there are a lot of few additional tasks जो आप Salesforce के साथ कर सकते हो, for which you need some offline tools. By offline, I mean not on Salesforce cloud, right? What are those tools? Let me just search here for something called Workbench.
right? Why is this? Let's go for workbench, right? Now, what is this workbench? Workbench is not a tool जो Salesforce ने बनाया है. You have to remember. Okay, Workbench is not a tool which Salesforce has created, or they maintain, or they have anything related to this. Okay, but the only benefit of Workbench is इसका जो functionality set आपको मिलता है, right? वो contains some of the data which is very useful to work with Salesforce. What are the kind of things you can do using Workbench? You can query data, you can download data, you can upload data, you can modify records. A lot of the things using Workbench you can do. Similarly, there is something called Data Loader, right? This is a different app which helps you upload mass data. आपके पास सपोज किसी एक ऑब्जेक्ट का डेटा है एक्सेल में, right? Thousands of record in Excel, and you want to upload that in Salesforce. So you can do that. You do that using what? Using Salesforce Data Loader. So this is an app. ये आप डाउनलोड करेंगे, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज करके you upload, download, insert, right, records into Salesforce. Now Salesforce के लिए data loader, this one is the standard Salesforce data loader, but there is also a browser based version which is the dataloader.io. ये वेबसाइट से चल जाता है, ऐप में नीचे ही होता है कुछ. So this also works, but recommended is to go with Salesforce data loader. Using that you can update data. So there are a lot of these additional tools which help you work more efficiently with Salesforce. And some Salesforce has developed, like Salesforce for Outlook, Salesforce mobile dashboard, data loader, right? And some other companies or other product companies have created but are very useful for working with Salesforce. So Salesforce ने क्या किया है? It has provided access. Okay, these ones you can use. तो उसके लिए we have something called a connected app use access. I would say this is something which most admin or developers do not need to modify. क्योंकि ये जो external apps का जो ये access है, this either comes from the business side, या फिर आप जहां भी कंपनी में काम कर रहे होंगे वहां पे जो कंप्लायंस टीम है उनको वैलिडेट करना पड़ता है. बिकॉज जब भी कोई कंपनी सेल्सफोर्स यूज कर रही है तो उनका सेल्सफोर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, राइट, कि आपका ये वाला एडिशन है, ये यूज कीजिए, इतने यूजर्स का हमने आपको लाइसेंस दिया, ये दिया, राइट. सो विद इन दैट कॉन्ट्रैक्ट डेटा प्रोटेक्शन इज इनबिल्ट, कि a company is storing their data within Salesforce with the assumption that Salesforce will protect this data. They would not let this data get leaked, right? There is no scenario that the data Salesforce के server से चोरी हो जाए, right? This should not be a case which should happen, क्योंकि this is a valid risk. आज के दुनिया में hacking वगैरह की वजह से a lot of personal data gets, stolen. You would think people's Aadhaar card database gets leaked, right? वहां से लीक होता है, बैंक का डेटा लीक हो जाता है, लोगों के क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स लीक हो जाता है, नेट बैंकिंग का लॉगिन डिटेल हो जाता है. सो डेटा प्रोटेक्शन इज समथिंग all companies are worried about, which is why Salesforce के साथ तो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये जो कनेक्टेड एप्स है इसके लिए आइदर दे हैव अ डिफरेंट कंप्लायंस टीम जो पूरा वैलिडेट करके चेक करके एक्सेस देगा, राइट, या फिर इन मोस्ट केसेस आज के दिन में तो आई वुड से ये टूल्स का यूज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, राइट. पीपल डोंट वांट एक्सेस बिकॉज इफ यू सी वर्कबेंच की साइट पे इट इज वेरी क्लियरली रिटन, वर्कबेंच इज फ्री टू यूज, इट इज नॉट अ ऑफिशियल Salesforce प्रोडक्ट, it has not been officially tested or documented by Salesforce, there is no support for this. Okay, इनकी तरफ से if you see support request for workbench should be directed to Stack Overflow. मतलब स्टैक ओवरफ्लो पे जाके आप नॉर्मल इंटरनेट पे लोगों से जैसे क्वेरी पूछते हो वैसे आप क्वेरीज पूछोगे. So there is no dedicated support also for this, which is why connected apps is something most developers or see here random people are questioning, and experienced Salesforce people or someone who has encountered the issues, they are answering. So it is not a secure tool, which is why this should be out of your scope for most cases. Now we come to the things which we have already practiced a little. We have some idea of what to do, which is the tab settings.
Now within this tab we already know कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई भी आप बना रहे हैं, तो उसको यूआई पे दिखाने के लिए यू नीड टू क्रिएट अ टैब ताकि वो आपको दिखे। नॉर्मल एप्स में यहाँ पे दिखेगा, राइट। कंसोल एप्स में कहाँ पे दिखेगा? विद इन दैट ड्रॉप टैब, राइट। If I go to the service console, you will see here. So even here what you're seeing, nothing but tabs. तो आपको टैब अगर आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट का एक्सेस वैसे ही आप दिखा नहीं पाओगे। यू हैव टू क्रिएट अ टैब। नाउ फॉर एवरी टैब what you can have is default is on, right, which means by itself whenever that profile logs in, right, they should not be able to see the tab, right, or by itself whenever they log in should they be able to see the tab. So that is your default on and default off. Now there is another one which is the tab hidden. अगर आप कोई टैब हाइड कर देते हो तो उससे क्या डिफरेंस आता है, राइट? So you will say we can make it default off or we make it hidden. Is there any benefit of this, right? There is one benefit which is अगर आप default off आपने कर रखा है, right? Let's see all of these are default off, which means by itself that tab cannot, even अगर navigation bar में है वो आपको नहीं दिखेगा, but you go here, you go to all tabs, here you will see it, right? So there is one way for them to access it even if it is default off. So default up off आप normally कब करोगे? When you don't want the UI to get cluttered, which means जैसे ये ऊपर जो 10 12 15 ऐसे हो जाते हैं, let's say if I had made all the apps as default on, what would have that mean? यहाँ पे जितने दिखे दिखे, उसके बाद बाकी ये मोड में भी ये लिस्ट यहाँ नीचे तक आ जाता है, सारे ऑब्जेक्ट दिखते हैं, right? If you see here, how many tabs are here? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 tabs are visible here, but actually there are a lot more tabs. It's not just 16, right? So that is the difference between those. Now if you make it hidden, that means ना यहाँ पे दिखेगा ना ही यहाँ पे दिखेगा. Okay, that means वो object by UI वो object का records that person cannot see if it is default off or if it is hidden. वो उस object का tab open करके वो list view में सारे records नहीं देख पाएगा. अब दिखाना ही नहीं है तो फिर हम एक्सेस ही क्यों देंगे? हम हिडन करके रख देंगे सब कुछ, राइट, या ऑफ करके रख देंगे, नहीं दिखाएंगे. व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई वुड आई नीड एन ऑब्जेक्ट कि उसका टैब दिखे ना बट एक्सेस होना चाहिए? दैट इज अ सिनेरियो कि यूआई पे ना दिखे लेकिन टैब ऑब्जेक्ट का एक्सेस होना चाहिए. फॉर दैट ओनली दे हैव एडेड दिस फीचर वेयर टैब इज हिडन बट डाउन द लाइन हम देखेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट पे परमिशन दे रखा है. दैट इज समथिंग यू कैन डू, राइट. सो दिस इज द पर्पस वेयर यू कंट्रोल आपका यूआई के अंदर कैसे कैसे आप आइटम्स ऐड करेंगे, हटाएंगे, राइट. सो फॉर मैनेजिंग दैट यू डू दिस टैब. नाउ within this if you see there is a checkbox here. What does this mean? This means overwrite users personal tab customizations. Okay, what does this mean? राइट नाउ ये जो आपको दिख रहा है दिस इज माई यूआई कि मैंने लॉगिन किया है इस ऐप में, मेरे को ये एप्स दिख रहे हैं. इफ आई गो हेयर एंड लेट्स से आई पुट केसेस अबव एंड आई लेट्स से ऐड एनी अदर ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ले लेते हैं, लेट्स से assets. I have added, right. Now when I log in I will see cases here and assets added here. Did I modify the app? क्या लगता है आपको यहाँ पे मैंने ऐप को मॉडिफाई कर दिया? No, sir, you have not modified, but you have given the permission or hidden the. I mean,
एक्सेस दिया आपने. राइट राइट. सो ये जो मैंने टैब्स यहाँ पे ऐड किए हैं, राइट, दिस इज अ यूजर लेवल एक्शन. If you just hover over this, you will see personalize your nav bar, navigation bar. कि this is just customization which I have done for myself. अभी अगर मैं एक नया यूजर बनाता हूं, उसको भी इसी ऐप का एक्सेस देता हूं और वो लॉगिन करता है, उसको केस यहाँ पे नहीं दिखेगा, उसको यहाँ पे एसेट भी नहीं दिखेगा. Why? This is my personalization. What that lets me do, let's say चलो मेरा और मेरी टीम में सबका एक ही प्रोफाइल है, but within team my work is only to work with accounts and contacts. I don't do any modification for campaigns. So I'll hide this for me, right? अब मेरी टीम में जो नया आया, उसने लॉगिन किया, उसको सारे टैब्स दिखते हैं. बट ओवर टाइम ही लर्न्स, ओके, उसको खाली कैंपेन्स को लेके ही काम करना है, उसको और किसी को लेके काम नहीं करना. What he will want campaign to be here, right? He will want assets to be here. उसके लिए ज्यादा efficient क्या रहेगा, right? If those are the first things he sees. So within this app, you can let people personalize based on their need. But within the profile, right, if you select this one, what happens? Irrespective of tab में कोई भी उन्होंने customization किया है, the next time they log in, it will revert to what is configured here. Okay, so their customizations are not something that they can make permanent. Right, so this is why this small checkbox is here. तो अगर आप चाहते हो नहीं मेरे ऐप में यही 3 टैब दिखने चाहिए, no one should be allowed to modify, nothing should be available, you will definitely select this one. Okay, else you let people modify as long as they know what to do. This is what is called the tab. Now within tab, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हमारे बहुत सारे हैं, हमको पता है, तो ऑब्वियसली हर ऑब्जेक्ट का भी एक टैब बना हुआ है. सो दोज आर ऑल एडेड हियर इन अ डिफरेंट. आप देखेंगे बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट लेवल सेटिंग्स है, दोज आर ऑलरेडी ब्रोकन डाउन इनटू स्टैंडर्ड एंड द कस्टम. जो भी आप कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टैब बनाएंगे, वो अलग से ग्रुप होगा, स्टैंडर्ड अलग से ग्रुप होगा. दिस जस्ट हेल्प्स यू सर्च फास्टर. You know where your object should be there. Now we come down to this huge block here, which is administrative permissions. Right. In most cases, these should only be performed, modified when there is a specific requirement for modification. Okay, because you will see here there are very simple permissions, then there are very complex permissions here. Right. Let's go through some simple. Right. Let's see this one, which is manage profiles and permission sets. Right. Right now, if you see, I was able to create a new profile. Right. मैंने एक प्रोफाइल से क्लोन करके एक और प्रोफाइल बनाया है. Why? Because I had an admin profile. But what is the difference? This permission is true. Right. Sorry, where did it go? Manage profile. Right. This permission is true. If this permission was false in my profile, so I would not have been able to clone. Right. Similarly, if you see a lot of the other ones, just from the name you will see most of the admins are manage users. ये परमिशन अगर है तो ही आप यूजर बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, यूजर का डेटा देख सकते हैं, उनका पासवर्ड वगैरह कोड से भी सेट कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू. किसी यूजर पे जाके उसका प्रोफाइल चेंज करना है, उसका रोल चेंज करना है. सो ऑल यूजर परमिशंस, अगर ये मैनेज यूजर्स ही नहीं है तो आपको कर ही नहीं पाएंगे, आपको लिस्ट व्यू खुलेगा ही नहीं वो व्यू. राइट. वेरी सिंपल परमिशन. ये जो क्रिएट एंड कस्टमाइज लिस्ट व्यूज, व्हाट इज दिस? If I go to cases, right, I see here there is all open cases. Right. Let me do one thing. I modify here another condition. So, right, this is the list view and I modify here
all closed cases में I go, okay, let me do one thing, right? ये closed equals to true है, and I add a filter that account name is equals to, let's add a specific account which we have, or okay, let's add contact name, right? Contact name equals to, let's say, save. This list view got modified. मैंने अपने अकॉर्डिंग कंडीशन डाला, ये मेरे पास आ गया, right? So very simple thing to do. Okay, I just modified the view, added a condition, and that is all. I can go, right, pick up some other view from there also. I can, modify it and remove it. That is also something I can do. Only if I have the permission, right, of manage list views. Only then you can create and customize list views. These are very simple permissions, but then there are some permissions which are very feature specific, right? Let's take this one, author apex, right? If I go here and I go to developer console, I can go here, new, create an apex class, right? Demo class, जहाँ पे हम कोड लिखेंगे, right? What happened? Okay, I think demo class is an already existing name. Oh, did I add space? I think I add space. Right. Demo class, right? I created a class. The only reason it let me create a class, again, permission. But some permissions are which you should not be modifying unless you specifically need. जैसे कि, let's take this one, API enabled. What does this mean? ये प्रोफाइल के यूजर यूजिंग कोड या फिर यूजिंग ऑटोमेशन या फिर यूजिंग फ्लो, कैन दे मेक एन इंटीग्रेशन कॉलम, राइट? सिमिलरली लेट्स गो टू अप्रूवल एडमिन. तो सेल्सफोर्स में ऑटोमेशन के अंदर समथिंग कॉल्ड अप्रूवल प्रोसेस होता है, जहां पे आप रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने के लिए अप्रूव करते हो. जैसे आप लोगों का लीव अप्लाई करने के लिए मैनेजर के पास अप्रूवल के लिए आप भेजते हो, राइट? सिमिलरली आप केसेस रिकॉर्ड्स वगैरह पे भी अप्रूवल लगा सकते हो. तो अप्रूवल आप दे सकते हो कि नहीं, राइट? देन ऐप आप मॉडिफाई कर सकते हो कि नहीं, जो ऐप के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो इसके पास आपके पास एक्सेस है कि नहीं. All these, if you see, are permissions freeze users. What does this freeze user mean? Let me show you. आप किसी यूजर को बंद कर सकते हो, टेम्पोरली उनका एक्सेस ब्लॉक कर सकते हो. हाउ? यूजिंग दिस फ्रीज यूजर. I think we had created some dummy profiles, right? Let's go to sales user. Freeze. तो ये लॉगिन नहीं कर पाएगा, बट ये फ्रीज कौन कर सकता है? जिसके पास परमिशन है. So this whole block is a administrative permission sections, and you have to remember यहाँ पे खाली sales cloud का permission नहीं है, यहाँ पे Salesforce administrator level permission है for all the apps. You will see some permissions here which are not even applicable for sales or service. Let's go to something called mobile app, right? Then let's go to I saw here somewhere, ये देखो, manage next best action, next best strategies, right? What does this work with? This works with analytics, right? Then we have, I saw somewhere, the one which I wanted to show you was this knowledge. There's a manage knowledge. Where is the knowledge? Right, manage Salesforce knowledge. तो Salesforce knowledge आपका क्या है? एक काइंड ऑफ आर्टिकल डॉक्यूमेंटेशन आप Salesforce में रख सकते हो. नॉर्मली सर्विस क्लाउड में यूज होता है, बट वो यहीं से मॉडिफाई हो, राइट?
देयर इज एक्सपीरियंस क्लाउड का परमिशन यहीं से होगा, मार्केटिंग क्लाउड का कुछ स्पेसिफिक परमिशन है आप यहाँ से कर सकते हो, एनक्रिप्शंस, राइट, डायनामिक डैशबोर्ड्स, रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड एक्सेसेस, right, user level permission. So all those administrative permissions are here. In most cases you would not be modifying permissions here unless there is a specific need, right? Now other than these admin level permissions, you also have some general user permissions. What are these? These are permissions which are specifically applicable for a user, कि जब कोई यूजर लॉगिन करता है उसको क्या क्या एक्सेस मेरे को देना है बाय यूजर एक्शन. जैसे कि इफ आई गो हियर, राइट, do I let that user access activities, right? Do I let them activate orders? एप्स मैनेज करने का परमिशन मैं उस स्पेसिफिक यूजर को देना चाहता हूँ कि नहीं, फ्लो वो बना सकता है कि नहीं. सो दीज आर यूजर एक्शंस जो यूआई लेवल एक्शंस उनके हम कंट्रोल कर सकते हैं. दीज आर ऑल आई वुड से काइंड ऑफ यूआई लेवल एक्शंस जो पॉइंट एंड क्लिक आउट ऑफ द बॉक्स टूल्स है सेल्सफोर्स के, वो दे कैन दे यूज. जैसे ट्रांसफर्स केसेस, व्हाट डज दिस मीन? इफ यू गो टू अ केस एंड you see here is an action of change on, तो इन केस फंक्शनलिटी नॉर्मली क्या होता है, केस किसी एक क्यू में जाता है. जैसे आप लोग जब ये कंप्लेंट वगैरह के लिए कॉल करते हो, जैसे सपोज फ्लिपकार्ट पे कॉल किया तो रिफंड के लिए किसी एक ग्रुप के पास जाता है कॉल, ठीक है. प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो रहा उसके लिए किसी एक ग्रुप के पास कॉल जाता है, राइट. आइटम में कुछ डिफेक्ट आया, रिप्लेसमेंट चाहिए तो किसी और के पास जाता है. तो एक क्यू से दूसरे क्यू में आप ओनर चेंज कर सकते हो कि नहीं, उसके लिए परमिशन है. बेसिक जैसे हम लोग टास्क क्रिएट कर रहे थे, आप टास्क बना सकते हो कि नहीं, परमिशन है. सो दीज आर ऑल यूजर लेवल परमिशंस जो यहाँ पे रहता है. नाउ administrative and user level permissions is something which I would say you should know where it is, but you don't need to be very familiar with what is happening because there are lots of permissions. I would say at least 120 130 permissions are here last I remember, right? Now we come to the most important part, which is why we have profiles, which is to control data ka access, right? Do we let them access the data? That is why we have these object permissions. Again, it is broken down into standard object permissions and custom object permissions, but exactly same thing. What does this read mean? Read का मतलब है I go to this page, I can see all this data, but I can't edit anything. That is all. I want someone जो login कर सके, केस देख सके, फिर केस बंद कर दे, but केस modify ना कर सके. So I will give them only read permission. Then we have the create, edit, and delete. Right? If you see here, create, edit, delete, these are not completely independent. How? As soon as I uncheck edit, delete also gets unchecked, which makes sense. अगर आप रिकॉर्ड अपडेट नहीं कर सकते तो क्या आपके पास रिकॉर्ड डिलीट करने का परमिशन होना चाहिए? Yes or no? Yes. होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए, राइट? यू शुड नॉट हैव एक्सेस, क्योंकि यू कैन ओनली गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आपका काम है अकाउंट्स डिलीट करना, टू समवन हु शुड बी एबल टू मॉडिफाई. डिलीट करने के लिए तो आपको रिकॉर्ड तो मॉडिफाई करना है, राइट? तो यू नीड एडिट परमिशन टू डिलीट. कैन समवन हैव जस्ट एडिट परमिशन? दैट इज फाइन कि वो अपडेट कर सकता है, बट वो डिलीट नहीं कर सकता. आई वांट मेरे सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड आए, लोग मॉडिफाई करें, ऑब्वियसली लोग मॉडिफाई करेंगे. जैसे सपोज एम्प्लॉय आया, राइट, आई शुड हैव पीपल, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आया, उसमें आके डिटेल्स डाला, उसका ट्रेनिंग खत्म हुआ, डिटेल्स डाला, डिपार्टमेंट डाला, सैलरी बढ़ा तो सैलरी अपडेट करेगा, राइट? और उसके बाद जब कंपनी छोड़ देगा तब उसका एम्प्लॉय का स्टेटस कर देगा रिजाइंड. ओके, बट मेरे पास 5 साल पहले कोई एम्प्लॉय था जिसने रिजाइन कर दिया, मेरे को डेटाबेस में रिकॉर्ड रखना है कि नहीं रखना? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए?
रखना चाहिए, राइट? Yeah. सो देन आई लेट पीपल मॉडिफाई दैट रिकॉर्ड. लेकिन एक बार एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बन गया, आई वोंट लेट देम डिलीट इट. Okay, which is why delete by itself is unselectable, but you can't have without edit permission delete permission. Okay, now this create and edit. Previously what used to happen, create और edit में भी simple link था, ठीक है ना, कि अगर आप edit कर रहे हो तो आपके पास create का link भी होना चाहिए, but that has now been removed. Now create, people can create a record but they cannot edit a record. मतलब पहली बार जब record बनाया, right, let's go to this, create a new record, जो डेटा यहां पे डाला दैट इज ऑल. कुछ मिस हो गया तो मिस हो गया. You don't let them modify. That is also a valid scenario, which is why now create and edit are independent. Okay. Now these were the 4 basic permissions, which is why these are grouped together as basic access: read, create, edit, delete. After that, if you see, we have 3 more permissions: view all records, modify all records, and view all fields. Right. Previously this was just view all and modify all records. I think 2-3 release पहले view all fields पे add हुआ, right? So what does this mean? You would say, okay, as an administrator मैं तो यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं तो अगर all open cases कर रहा हूँ तो मेरे को सारे cases दिखा दे रहा है, तो मेरे पास तो view all already है, right? That is not true. यहाँ पे वही cases दिख रहे हैं जिनका owner मैं हूँ, right? As an admin आपका भी जो ऑर्ग है, क्योंकि ये हम लोग का ट्रेनिंग ऑर्ग है, तो इसीलिए यहाँ पे अभी जो भी रिकॉर्ड है, इन सब रिकॉर्ड के ओनर यू विल सी, जस्ट गो टू एनी रिकॉर्ड इफ यू वांट एंड यू विल सी राइट नाउ फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स यू आर द ओनर. इसीलिए आपको सब दिख रहे हैं, राइट? बट इन एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन व्हाट विल हैपन, मेरा ऑर्डर मैंने क्रिएट किया, किसी और टीम को ऑर्डर उसने क्रिएट किया, राइट? नाउ डू आई वांट कि नहीं, मेरे को सारे यूजर्स के सारे रिकॉर्ड दिखने चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ ओनर मैं हूं कि नहीं, मुझे दिखने चाहिए रिकॉर्ड. दैट इज दिस व्यू ऑल, राइट? जस्ट बिकॉज यू हैव मार्क्ड रेड, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस ऑर्ग के सारे अकाउंट्स दिखेंगे. आपको उस ऑर्ग के खाली वही अकाउंट्स दिखेंगे इन रिकॉर्ड्स का आपको इन सम वे एक्सेस है. Now, what are the ways जिससे access मिलता है? That is something we will have to cover. Okay, there is a whole class for sharing which we will be covering tomorrow. Okay, but for now the principle is records का access is not something which is out of the box सबको मिला है. This basic access only considers कि आपको assign records आप देख सकते हो कि नहीं, दूसरों के records आप देख सकते हो कि नहीं. If you see here, if you want users with this profile to view access to all records of the selected object type, irrespective of the sharing settings, that is view all. Modify all, same thing, but आपको दिखेंगे भी और आप modify भी कर सकते हो. Ideally, other than administrator, modify all records permission तो किसी प्रोफाइल में होना ही नहीं चाहिए, unless specific use case है, requirement है कि नहीं इस वजह से चाहिए. If you don't have a justification of why to give the permission, you should not have modify all records permission in any profile other than system administrator. View all records के there are cases जहाँ पे view all का दे सकते हैं, देते हैं actually. Let's take an example of suppose let's take a loan company. Okay, अब एक लोन का कंपनी है जहाँ पे लोन के सेल्समैन आपका एप्लीकेशन डालते हैं, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है. उसके बाद आपका अंडरराइटर आपका वेरीफाई करता है, अप्रूव करता है, उसके बाद सैंक्शन ऑफिसर लोन आपका डिसबर्स करता है, पैसे आपके अकाउंट में भेजता है. नाउ देयर इज अ ऑडिटर इन द कंपनी जो क्या करता है, एवरी मंथ एंड रैंडमली पिक्स अप 100 लोन्स एंड सीज दैट ठीक से प्रोसेस हुए थे कि नहीं, सारे डॉक्यूमेंट है कि नहीं, राइट, सब अपलोड किया था कि नहीं, हर यूजर ने क्या चेंज किया था.
नाउ दैट ऑडिटर बाय इटसेल्फ, क्या वो कोई लोन बना रहा है? विल ही? Yes or no, guys? No. Anyone? Will that auditor have any scenario जहां पे वो किसी रिकॉर्ड का ओनर बनेगा? नो, राइट? No. क्योंकि एप्लीकेशन सेल्स वाला बंदा भरेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडरराइटर करेगा, पैसा डिसबर्स करने का जो प्रोसेसिंग है, रिकॉर्ड्स, वो सब सैंक्शन ऑफिसर बनाएगा। तो क्या ऑडिटर ने कोई रिकॉर्ड्स बनाए? डिड ही क्रिएट एनी रिकॉर्ड्स? ही डिड नॉट. He will not be owner of any of the records, but he has to see. So for auditor, we will give view all records as true, कि वो सबके रिकॉर्ड्स देख सके, ताकि रैंडमली अगर उसको 100 पिक करने हैं, सो ही नीड्स विजिबिलिटी टू ऑल 1000, राइट? तभी तो वो रैंडमली पिक कर सकता है। अगर उसको रिकॉर्ड दिखेंगे ही नहीं तो पिक कैसे करेगा, राइट? सो फॉर व्यू ऑल रिकॉर्ड्स देयर आर अ लॉट ऑफ बिजनेस यूज केसेस जहां पे ये परमिशन इज currently used, valid and applicable. And view all में कोई issue है नहीं, क्योंकि this is gives you read only access. You don't get to modify all records. You have to be very alert who you give to. Is this clear? Yes or no? Yes, sir. Everyone else? सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Right. Now, just below this, you will see some very small things, जैसे कि सेशन टाइम आउट। अगर मैं ये टैब खोल के रख दूं, कितनी देर बाद ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाए? वेरी सिंपल सेटिंग। सेशन सिक्योरिटी, लॉग इन करने पे क्या क्या चाहिए, राइट? पासवर्ड कितने दिन में एक्सपायर होगा, राइट? जैसे आपके पास होता है ना, पासवर्ड कैन नॉट बी सेम एज लास्ट 10 पासवर्ड, कैन नॉट बी सेम एज लास्ट 3 पासवर्ड, राइट? ऑल दिस सेटिंग्स इज यूजर सेटिंग्स है। पासवर्ड लेंथ मिनिमम कितना होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होगा, ये सब चीजें आर वेरी सिंपल सेटिंग्स जो आपका प्रोफाइल लेवल पे है। नाउ दिस इज बेसिकली बाय इटसेल्फ, प्रोफाइल इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके, बट जस्ट मेंटेनेंस ऑफ प्रोफाइल यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, ठीक है ना? यहाँ पे इफ यू सी देयर इज नथिंग टू कॉम्प्लेक्स, एवरीथिंग यू सी आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा। टैब का सेटिंग है, अच्छा टैब हिडन कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, राइट? ओके, कोड लिखना है, एपेक्स का परमिशन देंगे, राइट? अच्छा, उसको सीआरएम लॉगिन करने देना है, सेल्सफोर्स सीआरएम का परमिशन देंगे, रिपोर्ट बनाने देना है, प्रोफाइल का परमिशन दे देंगे, प्रोफाइल बनाने देना है, राइट? यू वांट टू लेट देम क्रिएट यूजर, मैनेज यूजर आप दे दो। सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पूरा सेंटेंस की तरह ही लिखा है परमिशन का नाम, कि आपको देख के पता चल जाए कि आप किस चीज का परमिशन दे रहे हैं, राइट? एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज रेगुलरली मॉडिफाइड। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो आप पहले ही रिक्वायरमेंट में आपके पास आता है कि देखिए इस प्रोजेक्ट के 5 टाइप के यूजर होंगे, तो आपको 5 प्रोफाइल बनाने हैं। अब ये आपने 5 प्रोफाइल बना दिए, काम खत्म। उसके बाद माइनर चेंजेस होगा, किसी ऑब्जेक्ट पे परमिशन देना है, किसी ऑब्जेक्ट से परमिशन हटाना है, दैट इज ऑल, राइट? सो people get very worried over profiles. There is not a lot of things to do in profiles, but it is just you have to be very cautious whenever you are working with profiles, okay? Because if something goes wrong here, कोई ऑब्जेक्ट का डेटा नहीं दिखना था, वो आपने गलती से व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल कर दिया, इवन मॉडिफाई ऑल नहीं, चलो सर, चलो लेट्स से मेरा एम्प्लॉय पे सबका सैलरी है, राइट? मेरा एम्प्लॉय पे सबका सैलरी है, मैंने गलती से किसी प्रोफाइल के लिए व्यू ऑल फील्ड्स कर दिया, तो अचानक से जाके पता चला इस डिपार्टमेंट के लोगों को पूरे कंपनी का सबका सैलरी दिख गया। शुड दैट हैपन? No, No. sir. नो, राइट? सो अब आपने परमिशन नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट ये मिस्टेक्स इन प्रोफाइल कैन कॉज इश्यूज, ओके? सो विच इज व्हाई with profiles you have to be very careful. Now let me save this profile.
अब मेरा ये जो प्रोफाइल था ये मेरा बन गया. दैट इज ऑल टू डू है, राइट. This all we saw. Before I move ahead, till here, any questions, any queries? किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो. Anyone? Everyone is clear what I told? पूरा समझ आ गया आपको अभी तक जो मैंने बताया? किसी को कोई डाउट नहीं है? Not from my side. Okay, great. Now, fine. अब ये तो हमने जब प्रोफाइल को एडिट किया था हमको ये सब चीजें दिखा. But even before you do edit, you can see there are few other options also. This one, जो यहाँ पे नीचे दिख रहा है, these same things are also visible at the top, right? The exact same things are visible here also. What are these? You can think of these as some related accesses जो आप दे सकते हैं. प्रोफाइल से तो आप ऑब्जेक्ट, टैब, ये सब फील्ड ये सब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं. बट अदर देन दैट what you can give is there are few related data types जिसका आपको कंट्रोल आप प्रोफाइल से मैनेज कर सकते हैं. Which is what? Let's take first one, which is the login IP ranges. What does this mean? Login IP ranges के अंदर, if you know, IP ranges are in what format, right? IP ranges are in the format of this dot this, right? IPv6 इस format में होता है. There is also IPv4, right? But IP addresses are normally in this format. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Right. Now, let's think कि मेरी कंपनी का लैपटॉप, मेरी कंपनी का जो नेटवर्क है, राइट? आई वांट कि ये ऐप मेरी कंपनी का है एंड ओनली माय कंपनीज एम्प्लॉइज शुड बी एबल टू लॉग इन टू दिस ऐप. इस सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में आई डोंट वांट रैंडम किसी भी लैपटॉप से कहीं से भी कोई लॉग इन कर सके, राइट? ओनली फ्रॉम स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस से लॉग इन कर सके. सो व्हाट आई विल डू इज I'll give people a VPN like this. इस टाइप का मैं एक VPN लोगों को दूंगा. And ये VPN, let's say, is for my office network where the IP address is 10.2.2.1 till 10.2.2.10. ये 10 IP एड्रेस ये मैंने इस VPN के अंदर मेरे ऑफिस में मैंने सेटअप कर दिया है कि कोई भी जब नेट लॉगिन कर रहा है VPN से तो आइडियली उसका IP एड्रेस रहेगा ये. Then I'll go to the profile and here I'll add that same IP address. 1 till 10. If I make this, see what happened. ये बोल रहा है आप जो मॉडिफिकेशन कर रहे हो इसमें आपका करंट आईपी एड्रेस ही नहीं पड़ रहा. मेरा लैपटॉप अभी जो इंटरनेट से कनेक्टेड है इट इज ऑलरेडी विद इन वन आईपी एड्रेस. तो ये आईपी एड्रेस शुड एटलीस्ट बी विद इन दिस रेंज, तभी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ. Let's say I modify this. After that, what will happen? Only users जिनका after connecting to internet IP addresses within this one will be able to log in. इस IP address के बाहर के लोग log in ही नहीं कर पाएंगे. What will that mean? Only people who are in my office connected to my office's Wi-Fi router will be able to log into this. So this is a way of what? Enhancing security.
फ्रॉम ऑन प्रोफाइल लेवल आप खाली ऑब्जेक्ट लेवल ये नहीं कर रहे कि कहां से लॉग इन कर सकता है, यू कैन add that also restriction. So that is the setting which is the login IP ranges. Similarly there is another which is login hours कि कितने बजे से कितने बजे तक में आप लॉगिन कर सकते हो. डू आई वांट किसी एक टाइम पे सब लॉग आउट हो जाए ऑटोमेटिकली, राइट. लेट्स से आई नो कि हर रात को 10 बजे से 12 बजे तक मेरे कुछ ऑटोमेशंस चलते हैं. आई डोंट वांट एनीवन टू बी एबल टू मेक चेंजेस रात को 10 से 12 बजे के बीच में. सो आई विल मेक श्योर लोगों का लॉग इन टाइम आई एंड एट 9 PM, ताकि अगर आप 9 बजे लॉग इन करके भी रखे वो आपको ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देगा. So even login hours you can control, right? Then after this what we have, apex class का access is something obviously कोड आपको चलाना है इस यूजर को, तो उसको उस कोड की क्लास का एक्सेस होना चाहिए. तो जब भी आप कोई क्लास बनाते हो उस क्लास का एक्सेस आप दे सकते हो. सिमिलरली विद विजुअल फोर्स पेजेस, सिमिलरली विद एक्सटर्नल डेटा सोर्स, जो हमने एक्सटर्नल लुकअप फील्ड पढ़ा था, राइट. अगर एक्सटर्नल डेटा सोर्स रहता है, कोई डेटाबेस हमने कनेक्ट किया है जिसका यूआरएल है, तो उसको एक्सेस करने के लिए भी एक्सटर्नल डेटा सोर्स है. Other than that, if you see flows, experience cloud, custom permissions, service presence status, ये सब आपका Salesforce का tools है. This is for service cloud. This is a type of automations. This is just permission, and this experience is what people called experience cloud or community cloud, right? वो एक default आप set कर सकते हो for user. Above this, if you see, there is something called custom metadata and custom settings. Salesforce के अंदर आप records का data normally store करने के लिए आप क्या बनाते हो, objects, right? But let's say आपको कोई type का configuration वगैरह store करके रखना है, so that is something for which we use something called metadata and custom setting. We will cover these in details later, no worries. Okay, then we will cover this, but basically आप उनका भी access आप यहाँ से दे सकते हो. This named credential and external credential, this is what is used to do a integration call out in Salesforce. Okay, आप Salesforce में normal जो आपका Java वगैरह से जैसे आप HTTP call out करते थे वैसे भी कर सकते हो, but for security Salesforce asks you to do it using these credentials. तो इसका I'll give you a brief down the line when we'll be covering how, you know, about developer में अगर basic में आपको दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं integration का build structure. So but this access also you do from here. So just not object tab ये सब का permission, there are a lot of other related, you know, minor permissions or modifications you can make, which all you can do from the profile level. Now once you have done everything, you have set up everything, your profile is ready, then what you do, you go to the users and you assign them the profile. And they get this. Is this clear? Yes, sir. Anyone has any questions, any queries or anything? No? Great. Now we come up with specific use case, which is, चलो मेरे को कोई परमिशन देनी है, परमिशन हटानी है, सब कुछ करके मैंने एक प्रोफाइल तो बना दी. दिस इज माय जनरलाइज्ड इंप्लीमेंटेशन. जैसा कि हमने पहले बोला था, पूरी सेल्स टीम का एक प्रोफाइल रहेगा, राइट. लेट्स टेक द एप्लीकेशन ऑफ द लोन, ठीक है ना. पूरी सेल्स टीम का एक प्रोफाइल रहेगा. लेट्स से पूरा जो सैंक्शन ऑफिसर्स है उन सबका एक प्रोफाइल रहेगा.
सारे अंडरराइटर्स का भी एक प्रोफाइल रहेगा. सो दैट वे एटलीस्ट व्हाट एवरी अंडरराइटर नीड्स एक्सेस टू वो मैंने प्रोफाइल में कर दी. राइट नाउ लेट्स से मेरे को बोलते हैं कि ठीक है आपके 100 अंडरराइटर हैं, इन सबको आपने ये दे दिया. लेट अस हैव 5 रीजनल हेड ऑफ अंडरराइटर्स. ठीक है 5 रीजन हो गया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल इंडिया. 5 जोन्स का एक सीनियर अंडरराइटर है. राइट एंड उसको आई वांट टू गिव मोर एक्सेस जो प्रोफाइल पे नहीं है. उसको प्रोफाइल में सपोज मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स का परमिशन नहीं दिया एंड आई एम लाइक नहीं इनको कुछ और एडिशनल ऑब्जेक्ट्स का परमिशन चाहिए. नाउ अब सीनियर अंडरराइटर को जो जो डेटा दिखना चाहिए, डू आई वांट माय नॉर्मल अंडरराइटर्स टू आल्सो सी दैट डेटा? No. No, right? So then what I should be doing is I should create another profile and वो अंडरराइटर के प्रोफाइल से ही मैं क्लोन करूंगा एंड वो सब परमिशन तो उसमें रहेगी, साथ में जो एडिशनल परमिशन है मैंने वो दे दी. राइट दैट इज समथिंग दैट कैन बी डन. यस और नो? कर तो Yes. सकते हैं ये. राइट दैट इज द अप्रोच, sir. दैट इज द सॉल्यूशन. बट इन दिस केस अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मेरा जो सीनियर अंडरराइटर का जो प्रोफाइल बनाया उसके अंदर ये जो 150, 250, 300 जो परमिशन अलग से फिर ऐड की, दैट इज रिडंडेंट. राइट जस्ट वो 2 ऑब्जेक्ट को एडिशनल परमिशन देने के लिए मेरा पूरा एक नया प्रोफाइल बनाना, इज इट वर्थ इट? No, sir. नो. राइट सिमिलरली लेट्स से एक और मेरा सिनेरियो है विच इज थिंक ऑफ इट लाइक ओके लेट्स से मेरा एक सिस्टम में कॉल आउट है. ठीक है ना, एक कॉल आउट है जो एक एपेक्स क्लास से मैं कर रहा हूं. राइट तो आई वांट वो कॉल आउट सेल्स टीम भी जब आप लोन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आप आधार कार्ड का नंबर वगैरह देते हैं. राइट यस और नो? Yes, sir. Yes. कहीं पे आप एप्लीकेशन वगैरह करना है, आधार कार्ड का अपना नंबर दिया. सो लेट्स से क्या होगा, इनिशियली एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सेल्स टीम चेक करेगी अरे ये वैलिड आधार है कि नहीं. राइट सो दे विल मेक एन इंटीग्रेशन कॉल आउट टू यूआईडीएआई और चेक करेंगे इज दिस अ वैलिड आधार. ठीक है हो गया, तो फिर वो आपका एप्लीकेशन बनाएंगे, सब सबमिट करेंगे. अब जब आपको पैसा देंगे उससे पहले आपका एक वेरिफिकेशन होता है फॉर लोन एप्लीकेशन. राइट सो इन दैट केस जो वेरिफिकेशन ऑफिसर जो है उसको भी एक बार आधार वेरीफाई करना पड़ेगा फिर से. राइट नाउ इन दिस केस आई हैव 2 यूजर्स व्हिच हैव 2 different profiles. सेल्स यूजर और अंडरराइटर यूजर का ऑलरेडी डिफरेंट प्रोफाइल्स है, बट देयर इज सम स्पेसिफिक एक्सेस व्हिच आई वांट टू बी कॉमन. तो अब मैं क्या करूं, अब मैं कंबाइंड एक प्रोफाइल बनाऊं जिसमें सारा चीजें डालूं. आई डोंट वांट दैट क्योंकि सेल्स यूजर का जो परमिशन है और अंडरराइटर का परमिशन आर कंप्लीटली डिफरेंट. 2 कॉमन परमिशन के लिए क्या मैं बाकी सारी 50 परमिशंस को भी कॉमन कर दूंगा? इज दैट अ वैलिड सिनेरियो? No, sir. No, right? So in this case, what we end up with in both the situation जो मैंने आपको बोला, एक अंडरराइटर सीनियर अंडरराइटर और सेल्स और अंडरराइटर दोनों का कॉमन फंक्शनैलिटी. द रिक्वायरमेंट इज हमको दोनों का ओवरऑल परमिशंस डिफरेंट ही रखना है, उसके साथ सम स्मॉल परमिशंस वी हैव टू गिव व्हिच हैज टू बी कॉमन. राइट सो फॉर दैट व्हाट वी हैव इज परमिशन सेट. परमिशन सेट as the name suggests it is nothing but a set of permissions जो आपने एक साथ ग्रुप कर रखा है. राइट अभी मैंने क्या बनाया, अभी मैंने एक एपेक्स क्लास बनाया था, डेमो क्लास. राइट लेट मी गो एंड क्रिएट अ परमिशन सेट व्हिच इज लेट्स से जो मेरा वो कॉल आउट था वो मैं इस क्लास से कर रहा हूं, डेमो क्लास एक्सेस. राइट एंड सेव. मैंने एक परमिशन सेट बना दी and inside this I just go, if you see all these settings are the same thing जो हमने प्रोफाइल में किया था. एप्स का, कनेक्टेड एप्स का, ऑब्जेक्ट का, परमिशंस का, एपेक्स क्लास, विजुअल फोर्स, फ्लो, नेम क्रेडेंशियल, एक्सटर्नल क्रेडेंशियल, राइट, कस्टम सेटिंग,
सिस्टम परमिशंस, सर्विस प्रोवाइडर, व्यू ऑल, मॉडिफाई ऑल, ऑब्जेक्ट पे आप सब करोगे। ऑल दिस आर द एग्जैक्ट सेम थिंग जो हमने वहां पे भी किया था, राइट? हमने परमिशन में किया, and so I go here and inside this I go, okay, I go to Apex class access, edit, and I add access to the demo class. Save. That's all. Now what I'll do, अलग अलग यूजर का अलग अलग प्रोफाइल रहे, जो है रहे, I'll just go here, click on manage assignments and add. जिस यूजर को देना है, I'll go to this user also, I'll go to this user also, and I'll go to this user also. एक कस्टम एडमिन प्रोफाइल है, एक एनालिटिक्स क्लाउड सिक्योरिटी यूजर है, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? बट आई विल गो एंड I'll give this permission set to them. Now within this also I have another option कि कस्टम एडमिन और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को मुझे दे देना है एक्सेस इस क्लास का, बट ये जो सिक्योरिटी यूजर है ये खाली टेम्पोरली है इस प्रोजेक्ट में, लेट्स से फॉर अ मंथ. सो आई स्पेसिफाई एन एक्सपिरेशन डेट कि इस यूजर को इस क्लास का एक्सेस है ओनली फॉर 30 days, उसके बाद नहीं होना चाहिए. That is also something I can do, but for now let's go with no expiration date, never expires. परमिशन दिया, ऐसा ही. अब क्या हुआ, तीन अलग प्रोफाइल के यूजर्स, राइट? तीनों को मैंने एक्सेस दे दिया टू सेम क्लास, मींस I was able to give common access while keeping different profiles. So redundant प्रोफाइल भी नहीं बनाना पड़ा, ज्यादा परमिशंस भी मुझे मैनेज नहीं करना पड़ा, और कॉमन जो परमिशन था मैंने वो दे दिया. Is this clear? Yes, sir. Now ऐसे परमिशन देना, is this better than creating another profile and copying everything? सर अनदर प्रोफाइल बनाएंगे तो उसका वो तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा फिर. Exactly. And not just that. See, the benefit is not just कि आपने redundant बनाया. Permission set से आप क्या कर सकते हो? You can group the, requirements. Let's say आपका कोई एक नया फीचर आप रिलीज करने वाले हो, जिसमें 5-6 नए ऑब्जेक्ट्स हैं, ये होगा, राइट? बस ये वन फीचर कैन नॉट जस्ट बी वन परमिशंस. नॉर्मली एक फीचर विल बी लाइक 3-4 ऑब्जेक्ट हो गए, उनके 4-5 कंपोनेंट हो गए, फील्ड्स हो गए, पेज लेआउट्स हो गए, राइट? ये सब एक साथ ग्रुप होके जाएगा, राइट? And you want that app to be only accessible to few people. So permission set cannot just be used to selectively give permissions, but आप ग्रुप के परमिशन दोगे. लेट्स से ये वाला कॉल आउट के लिए जस्ट ये एक क्लास नहीं है, 4-5 क्लास है, तो मैं वो 4-5 क्लास है और 2 नए ऑब्जेक्ट भी है, तो आई विल ग्रुप ऑल दोस 5 थिंग्स टुगेदर कि ये जो परमिशन सेट है इसके अंदर देयर इज एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू मेक द कॉल आउट, एंड आई विल गिव दिस परमिशन ओनली टू दोज हु कैन मेक द कॉल आउट. प्रोफाइल में आप ये कर सकते हो. प्रोफाइल में आप एक्सेस के बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, परमिशन सेट पे आप एक्सेस के बेसिस पे दे भी सकते हो, प्लस इट आल्सो हेल्प्स यू ग्रुप टुगेदर थिंग कि कोई एक बंडल को एक साथ आप भेजो तो उसका एक साथ परमिशन बना के भेजो, राइट? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज एक लेट्स से देयर इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट जहां पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स, हंड्रेड्स ऑफ डेटाबेस, राइट? लेट्स से 40-50 इंटीग्रेशन है, राइट? And there is one set of integrations which always works together, right? But different times different people do it. तो आप क्या करोगे, हर बार जाके तो प्रोफाइल मॉडिफाई करोगे नहीं. अच्छा, इस अभी ये यूजर कर रहा है तो इसके प्रोफाइल में ऐड करो, फिर इसके प्रोफाइल से हटा के आप दूसरे प्रोफाइल में ऐड करो, राइट? तब जो करेगा, इंस्टेड आप क्या करोगे, वो सारा परमिशन एक परमिशन सेट में डाल के रखोगे. अच्छा, ये इस महीने ये कर रहा है, इसको परमिशन सेट असाइन कर दिया.
नेक्स्ट मंथ इसको असाइन कर दिया, उसके अगले मंथ इसको असाइन कर दिया. इट मेक्स द परमिशंस मोर मैनेजेबल without needing to keep modifying profiles. Why? Because as I mentioned, you have to be very cautious when working with profiles. You should avoid unnecessary updates in profiles, right? Profile is your baseline access. तो इसको आप एक फिक्स्ड करके रखने की कोशिश करोगे. अननेसेसरी एक्सेस ताकि ना मिले, उसका सबसे इजीएस्ट तरीका है पूरा देख समझ के प्रोफाइल बना दिया. अब बिना बात की छेड़छाड़ मत करो प्रोफाइल पे, राइट? सो दैट इज व्हाई प्रोफाइल इज योर मेन स्टैंडर्ड एक्सेस. उसके बाद जब भी आपको कुछ एड ऑन देना है, कुछ कॉमन बना के देना है, ये देना है, यू गो विथ परमिशन सेट. एंड विथ प्रोफाइल्स इफ यू सी हियर, प्रोफाइल में अगर मैं अभी किसी प्रोफाइल में जाता हूं और वहां पे जाके आई कैन डू अ वेरी सिंपल थिंग. प्रोफाइल इज यूज टू restrict also, right? I can go and make this tab hidden for this person using profile, but with permission set you can't take away access, right? Permission set पे अगर आप जाते हो, where is the, this is the profile, where is the permission set? Permission set में अगर मैं जाता हूँ इस permission में, if I go, जो हमने बनाया, कहाँ गया ये वाला demo class access, right? If I go here, go to this assigned apps, I can't remove access. ठीक है, आप खाली एक्सेस दे सकते हो परमिशन सेट से, आप हटा नहीं सकते हो परमिशन सेट से, राइट? अगर किसी को प्रोफाइल में परमिशन मिल गया, फिर आप परमिशन सेट से परमिशन हटा दोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल. सर कभी गलती से अपने को जिसको परमिशन नहीं देना था उसको परमिशन दे दिया तो अपन हटा सकते हैं क्या, वो कि वो वैसे ही रहेगा? हाँ, आप मॉडिफाई कर सकते हो, इमीडिएटली मॉडिफाई कर सकते हो. ये परमिशन सेट अभी मैंने 3 यूजर्स को दिया, राइट? लेट मी गो, आई विल सिलेक्ट ऑल 3 एंड डिलीट, रिमूव असाइनमेंट. उनका परमिशन हट गया, राइट? ओके. एनीवन, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट? None? Okay, I think what the problem here is, we have covered, like ये जो है by concept, these are some complex things, which is why I think it is better if you guys have some time to go through this. What I'll do right now is, जो main जो documentation है इसका, right? I'll share that to you in WhatsApp पे, I'll share, right? So that you can go through this documentation. I want you guys to go through this documentation. I'm sending the main for user profiles का जो है, and I think where is the permission sets, right? Go through this documentation.
study whatever is here, go through the recording, right? आप पूरा recording फिर से देखिए, आप खुद अपने org में जाके profile permission sets में जाके देखिए what all is there, what all is not there, right? क्या क्या वहां पे है. Please go through this topic, go through the documentation, whatever queries you have, whatever doubts you have, आप ये compile कीजिए. And tomorrow, first half of the class, we will first dedicate, if there are queries, to discuss any queries of profiles and permissions. Because the next thing which we will be doing is sharing, right? Which is, जैसे मैंने आपको बोला अभी, right, कि प्रोफाइल या परमिशन से आप ये कंट्रोल कर सकते हो, व्यू ऑल, मॉडिफाई ऑल. बट व्हाट इफ यू डोंट हैव एक्सेस बट स्टिल यू वांट अदर पीपल टू सी रिकॉर्ड्स, राइट? तो वो कैसे कंट्रोल होता है इन सेल्सफोर्स? So I'll also go through that tomorrow. Okay, is that clear? Yes, sir. Fine. Take your time, go through the documentation, go through everything, and we'll connect again tomorrow. Okay.